चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें 5 डिफरेंट एपीज गिवन है और इन एपीज में एग्जैक्टली 2 टर्म्स जो हैं वो गिवन है हमें, और बाकी मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड करनी है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी भी एपी में अगर हमें कोई भी 2 टर्म्स अगर गिवन होती हैं तो हम उस एपी का ए और डी की वैल्यूज निकाल कर वी कैन फाइंड द फुल एपी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स विल यूज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म हियर, और यहाँ पर हमें जो गिवन है दैट इज T3 हमें गिवन है कि थर्ड टर्म 26 है, और ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे सो n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 डालेंगे एंड विल गेट a प्लस 2d इज 26। और ऐसे ही हमें यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म गिवन है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालेंगे, सो बेसिकली a इज दैट फर्स्ट टर्म, सो a इज इक्वल्स टू 2। So 2 equations 2 variables, so we'll solve it. Let's subtract these equations. जब आप subtract करेंगे तो जो a है वो आपका cancel हो जाएगा and we'll get 2d is 26 minus 2, और 2d is 24 और d is 12। तो यहाँ पर हमारे पास d जो common difference है that has come as 12। So जो हमारी जो यहाँ पर 2 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी that will be 12 more or 14, and the next term is again 12 more, that is 26। चलिए जी, सेकेंड केस ट्राई करते हैं। यहाँ हमारी अप्रोच सेम रहेगी, जहाँ हमें 2 टर्म्स जो हैं एपी की गिवन है, उन 2 टर्म्स से हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे और वहाँ से विल गेट वैल्यू ऑफ ए एंड डी। सो विल यूज nth टर्म फॉर्मूला हियर एंड T2 is given as 13, that means a plus 2 minus 1, that is 1 only, so a plus d is given as 13। T4 fourth term is given as 3, so a plus 3d is your 3। So 2 equations 2 variables, solve it by subtracting them, so a will get cancelled down and will get negative 2d is 10। as negative 2d is 10, so d is -5, d -5 है, so यहाँ 13 के बाद जो टर्म होगी दैट विल बी 13 - 5, एंड 13 से पहले जो टर्म होगी, ठीक है, दैट विल बी 13 + 5। सो हियर द फर्स्ट टर्म इज योर 18 एंड द थर्ड टर्म दैट इज 8। लेट्स चेक द थर्ड ऑप्शन नाउ। सो अगेन इट्स अ सेम केस, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है। हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए अगर फोर्थ टर्म देखेंगे T4 इज 9.5, that means a plus 3d is 9.5, T1 is 5, that means a is 5। again 2 equations 2 variables, solve it by subtracting them। when we subtract, a will get cancelled down and we'll get 3d is 9.5 minus 5, so 3d is your 4.5 and thus d will be 1.5। so d is the common difference, so after first term, for second term we'll have to add 1.5, for third term we have to add again 1.5, and these are the missing terms। let's check the fourth case। same, if 2 terms are given, that means job is done, we can make 2 equations and solve it to get value of a and d। so using again nth term formula, here we have got sixth term T6 is your 6, that means a plus 5d is 6। first term is -4, so a is -4। 2 equations 2 variables, subtract them, so a will get cancelled down and will get 5d is 6 minus minus of 4, so that will become 6 plus 4 or 10, so 5d is 10 and thus d is 2। d is the common difference, so from first term we can get second term by adding 2, again adding 2, and then again adding 2 and 2, so these are the missing terms of this given AP। let's check the fifth case। so here again 2 terms are given, so we can form 2 equations। so first equation T2 second term is 38, so we can say a plus d, that's 38, and sixth term is -22, so we can say a plus 5d is -22। 2 equations 2 variables, subtracting them, a will get cancelled down, will get
D minus 5D, that's minus 4D, is 38 minus 22. So that will be 38 plus 22 or 60. Solving it, we'll get D is 60 divided by minus 4 or D is minus 15. So that means जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो माइनस 15 है. फर्स्ट टर्म में से जब हम 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 38 आ रहा है. तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो 38 प्लस 15 दैट इज 53. और जो यहाँ पर थर्ड टर्म है 38 में से हम 15 माइनस करेंगे सो दैट्स 23. अगेन विल सब्ट्रैक्ट 15 दैट्स 8. अगेन विल सब्ट्रैक्ट 15 दैट्स minus 7. So these are the missing terms.